So with chapter number 1 only we will continue. In the last few lectures we have seen about the states of matter. We have discussed in deep about the solid state, liquid state and gaseous state, isn't it? So today we will go with the new topic that is given on page number 6. Okay, in that first one it is given that can matter change its state? Any matter if it is there, उसका स्टेट जो है हम चेंज कर सकते हैं. तो उसका एक बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो वाटर है. वाटर जो है तीनों स्टेट में देखा जाता है. वाटर इज फाउंड इन 3 states. Okay, water itself is a liquid, so it is a liquid state. It is also present in solid state. Okay, in solid state it is present in the form of ice, isn't it? And in gaseous state it is present in the form of water vapor. Isn't it? So water itself is a liquid, it is present in liquid state. Water vapor is a gaseous state. Okay, and ice that is in solid state. So this is the one example given here, that any means we have talked about water here. Which matter here it is? Here it is a water. So water is found in 3 states. Okay, so other matter possibilities, there are many matters can change its state. Okay, so that was all about. Now next we will see is effect of change of temperature. Effect of change of temperature. What is the meaning of this? The meaning of this is, if you are changing the temperature of any matter, then what will be the effect seen to that particular matter. आप कोई भी मैटर ले रहे हो, उसका जो है टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हो. ठीक है, आप इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, इन शॉर्ट आप चेंज कर रहे हो टेम्परेचर, तो उस मैटर पे क्या इफेक्ट दिखाई देगा? What will be the effect seen when you change the temperature of any matter? So here one example is given. Okay, example of ice is given to you. We will see this how the effects will be seen. Effect कैसा होगा जब हम टेम्परेचर जो है चेंज कर रहे हैं. ठीक है, let us see. So here one activity is given to us, that is 1.12. Activity 1.12, isn't it? I will read for you and then I will explain to you. So what we have to do here is, take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with ice as shown in the figure. Start heating the beaker on low flame. Note the temperature when this ice starts melting. Note the temperature when all the ice has converted into water. Record your observation for conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation for the conversion of water in a liquid state to the gaseous state. Okay students, let me first of all explain the activity to you.
So students, first of all we will take a beaker. Okay, in beaker we are taking 150 gram of ice. ठीक है, बीकर ले लेना है और बीकर के अंदर 150 ग्राम ऑफ आइस. Okay, below you have to keep tripod. On tripod only you will keep the beaker, and below tripod there is a burner. Okay, next you have to take a stand. Okay, with the help of stand you have to hang the thermometer inside the beaker, and keep one thing in mind, that mercury of the thermometer should be in contact with this thing ice, isn't it? So what we have taken, students, we have taken stand, we want beaker, we want tripod, burner is already available in laboratory. First of all you will take 150 gram of ice in beaker, you will keep on the tripod, and tripod is on burner, isn't it? Now hang the thermometer on with the help of stand, and that thermometer, the mercury of that thermometer, you know inside the thermometer there is a mercury, isn't it? So that mercury should be in contact with ice. Okay, now start the flame from here, start the burner and keep the flame low, isn't it? अभी आपको जो है फ्लेम को स्टार्ट करना है और ये ध्यान रखना है, you have to keep one thing in mind, that is the flame should be low and your eye should be on thermometer. आप your eye contact should be on thermometer. थर्मोमीटर पे कंटिन्यूसली वॉच रखना है. क्यों? क्योंकि आप नीचे से हीट एनर्जी दे रहे हो तो आइस जो है स्लोली एंड स्टेडली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. ठीक है, आइस को आप टेम्परेचर दोगे, यहाँ पे आपने आइस लिया है ना, आइस को आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में यानी लिक्विड में. तो जब आइस जो है, व्हेन द आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, एट दैट टाइम यू हैव टू सी द टेम्परेचर हियर इन द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर पे ध्यान रखना कि कौन से टेम्परेचर पे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, और दूसरा आपको ये भी देखना है, पहले आइस को आप हीट एनर्जी दोगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर को हीट एनर्जी कंटिन्यूसली यहाँ से बर्न स्टार्ट है, फ्लेम स्टार्ट, तो वाटर को जब आप हीट एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी देते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में. ठीक है, तो जब वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तब भी आपको थर्मोमीटर में देखना है कौन से टेम्परेचर पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. Isn't it? So this you have to do in the activity. So you will turn on the flame, you will keep your eye contact on thermometer, and you will see the temperature on which this ice gets converted into water, and you have to check the temperature at which the water is getting converted into water vapor, isn't it? Okay. Students, you can note it down, okay, of this activity what we have to do. Then I am reading further for you. We will discuss it further.
Now further, page number 7, first paragraph. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with the greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to liquid. The temperature at which solid melt to become a liquid, underline that, at an atmospheric pressure is called as melting point. Students, what basically is happening here? Okay, students, we already know when you will give heat energy to ice, it will get converted into water. But what is the chemistry? What is the science behind that? That you will see. Okay, students, one thing you already know. We have learnt in the characteristic of particles that particles of matter are continuously moving. Isn't it? If you remember, कोई भी मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं. ठीक है, कोई भी मैटर हो उसमें पार्टिकल्स मूव करते ही हैं. तो यहाँ हमने कौन सा मैटर लिया है? हमने यहाँ लिया था आइस. ठीक है, तो आइस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स भी मूवमेंट कर ही रहे हैं. बट व्हेन वी आर गिविंग हीट एनर्जी, what will happen? The speed of particles, the speed of the moving particles increases. And you know, students, whenever anything, any substance, whatever, any particles are moving, means it possesses kinetic energy. So here you know, inside the ice particles, means ice particles are moving, means it possesses which energy? Kinetic energy. Isn't it? See. See, students, particles of ice are moving, isn't it? Means it possesses which energy? It possesses kinetic energy. But when you are giving heat energy to this ice, when you are giving heat energy, okay, नीचे आपने फ्लेम स्टार्ट किया तो फ्लेम में सब कौन सी एनर्जी दे रहे हो? हीट एनर्जी दे रहे हो. तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी. It will increase the kinetic energy of particles. When the kinetic energy of particle increases, the speed, the particles will move more speedily. Particles will move more speedily. They will leave their fixed position. And they will overcome the force of attraction also. As a result, the time will come that these particles of ice gets converted into particles of water. Ice is solid and water is liquid. ठीक है, once again see, you know particles are continuously moving. Okay, so particles of ice are moving
It possesses which energy? Kinetic energy. And when you are giving heat energy, what happens? The kinetic energy increases. When kinetic energy increases, the particles will start moving more speedily. As a result, the force of attraction between the particles of ice, the force of attraction between particles of ice will be broken. As a result, they will leave their fixed position. ठीक है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है स्पीड में मूवमेंट कर रहे हैं. स्पीड में मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नहीं हीट एनर्जी. तो स्पीड में मूव करने की वजह से, और दूसरा ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच का वो भी जो है ब्रेक हो रहा है. इसीलिए वो अपना फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे. इट विल लीव इट्स फिक्स पोजीशन एंड द टाइम विल कम दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू particles of water, that is it will get converted into liquid. So this is whole behind this. So because of heat energy, kinetic energy increases. Kinetic energy increases, particles starts move speedily more, and the force of attraction between them is broken. As the force of attraction between them is broken, they will leave their fixed position, and as they are leaving their fixed position, they get converted into water. Isn't it? You can write down this flow chart, it will be helpful to you. Okay students, now students, what is the melting point? Okay, I have already explained to you the temperature at which, because you are having attention, your eye contact is on thermometer also. So the temperature on which the ice gets converted into water, that you have checked. Okay, so the temperature at which this ice gets converted into water is known as melting point. Okay, the temperature at which the ice gets converted into water is known as melting point. And students, the melting point is 0 degrees Celsius. Okay, what is the melting point? It is 0 degree Celsius, and Kelvin is also given to you, 273.13 Kelvin, 16 Kelvin. Okay students, now what another thing, what is fusion? So melting point, I am writing for you, what is melting point? The temperature at which solid gets converted into liquid. The temperature at which the solid gets converted into liquid is known as melting point.
तो उसे हमें फ्यूजन उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजन। अगर टेम्परेचर ऐड हो, वर्ड टेम्परेचर इज एडेड, देन इट इज अ मेल्टिंग पॉइंट। इज दैट इट स्टूडेंट्स? नोट इट डाउन। Now students, next thing, when you will observe the this thing, temperature during melting of ice into liquid, for few minutes you will observe that the temperature is same only, that is 0 degree Celsius, or if we talk about Kelvin, that is 273.16 Kelvin। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जब आप देखोगे कि आइस जो है सॉलिड में है, सॉलिड का जो है लिक्विड हो गया वाटर में, थोड़ी देर के मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, उसके बाद भी आप जो है फ्लेम को कंटिन्यूसली ऑन रखोगे, फ्लेम इज कंटिन्यूसली ऑन ओनली, स्टिल यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज सेम ओनली 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, क्या रीजन है? क्योंकि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो भी 0 डिग्री सेल्सियस क्यों दिख रहा है? नीचे से फ्लेम तो स्टार्ट ही है। द रीजन बिहाइंड दिस इज वॉट एवर द हीट एनर्जी यू आर गिविंग फ्रॉम द फ्लेम इज used up for converting the solid into liquid। ठीक है, सॉलिड को टोटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आप नीचे से हीट एनर्जी दे रहे हो फ्लेम में से, वो उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें जो है टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिखेगा, तो उससे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट यानी हिडन, वी आर नॉट एबल टू सी द चेंज इन द टेम्परेचर इन थर्मोमीटर। When we are not able to see the change in the temperature, when the ice is getting converted into water, still the temperature remains same, it is not changing, because the heat energy is used up, is still used for converting the solid into liquid। So temperature of the system, here system is beaker। ठीक है, यहाँ पे हमने system कौन सा लिया है? बीकर। बीकर का system same रहेगा, sorry, temperature will remain same, so that is known as latent heat। ठीक है, I am reading for you, see students, last paragraph, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change। Which is the system here? कंटेनर लो, वो जो है सिस्टम कहा जाता है, उसके अंदर जो भी चीज हो वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सिस्टम के अंदर बीकर है, बीकर के अंदर आपने क्या लिया था? आइस। ठीक है, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat, underline that, gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। As this heat energy is absorbed by ice without changing any rise in the temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। Okay students, once again, the temperature of the system will not change। Which is the system here? Here system is beaker, and in beaker we have added ice, will not change even after melting point।
में कन्वर्ट हो जाए, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो भी हमें जो है टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखेगा इवन आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज दिस हीट एनर्जी is absorbed by ice and it is used to convert and it is used to overcome forces of attraction of ice particles। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आ जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट के बाद भी आप फ्लेम ऑन रखोगे, फ्लेम आप ऑन रखोगे तो हम क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग हीट एनर्जी। देन आल्सो देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है एब्जॉर्ब हो जाएगा आइस में, ठीक है, ऑलरेडी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ओवरकम करने में यूज होगा, यानी पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करने में यूज होगा। तो ये टेम्परेचर हम देख नहीं पा रहे, मीन्स इट इज दिस चेंज इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन थर्मोमीटर, सो इट इज सेड दैट इट इज हिडन मीन्स latent। So this thing is also known as latent heat of fusion। Heat of fusion means the heat energy required to convert 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure with its melting point this is called latent heat of fusion। Okay, fusion, you know what is fusion? Change in state from solid to liquid is known as fusion, and latent heat of fusion means the heat energy that is required to convert 1 kilogram of solid to liquid at atmosphere pressure and with its melting point, this is known as latent heat of fusion। जो हीट एनर्जी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, ठीक है, सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Okay, now students, the same will happen with the conversion of this thing water into water into gas। ठीक है, सॉलिड जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है वैसे क्या होगा? वाटर भी जो है गैस में कन्वर्ट होगा। आप वाटर को क्या दोगे? हीट एनर्जी दोगे। ठीक है, सॉलिड आइस को आप
water vapor. Students, the phenomenon, the process is same. You have seen that when you were giving heat energy to solid, at that time kinetic energy of particles increased, isn't it? And that's why they leave their fixed position and got converted into liquid. ठीक है, आपने जब हीट एनर्जी दिया इसको तो उसके अंदर जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, यानी बहुत जल्दी से मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ब्लॉक हो गया, वो अपना फिक्स पोजीशन छोड़ दी है और कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो वाटर टू आइस में भी वही होगा, वाटर को हीट एनर्जी दे रहे हो तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर विल increase, then they will overcome the force of attraction. वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रोक हो जाएगा, ओवरकम यानी ब्रोक हो जाएगा, इट विल ब्रोक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे विल लीव फिक्स पोजीशन, अपनी जो फिक्स पोजीशन है वो छोड़ देंगे वो, और अपनी फिक्स पोजीशन लीव कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर में। सो सेम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे हमने देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, when solid is converted into liquid it is known as fusion. When liquid is converted into water vapor, it is known as vaporization. Isn't it? Change in state from solid to liquid is known as fusion, and change in state from liquid to gas is known as vaporization. Here we have seen latent heat of fusion. Here we will see latent heat of वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट फ्यूजन या लेटेंट आपको पता ही है कि जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका था, व्हेन द सॉलिड गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट वाज रीच्ड, still the temperature of the system remained same, that is 0 degree Celsius. Melting point is how much? 0 degree Celsius. ठीक है, तो वो क्या था, लेटेंट था, इट वाज हिडन। सो सेम थिंग हैपेंस हियर, व्हेन लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मींस द टेम्परेचर एट व्हिच व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच water gets converted into water vapor, water gets converted into water vapor is known as boiling point. Okay, so even if the boiling point is reached, at that time the temperature will be same, it will not change. Okay, so that is known as latent heat of vaporization. Okay students, you know the boiling point of water, what is it? 100 degree Celsius. So what is latent heat of fusion? The heat energy required to convert liquid into gas. The heat energy required to convert liquid into gas at atmospheric pressure and at boiling point is known as latent heat of vaporization. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मींस द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वाटर वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिc pressure is known as
this thing, latent heat of fusion. Oh, sorry, latent heat of vaporization. Okay. So I hope this concept is clear to you. Okay, students, you can write. If you want to note it down, you can note it down. Okay, students, I hope it is clear till here. If you are having any doubts, any queries regarding this or any of the topics, you can tell me in the comment section without any hesitation. Okay, if you will ask me, then and only then I will come to know that you are having any doubts. Okay, revise the topics that we are doing in the lecture so that it gets clear to you, and do it regularly also on the regular basis. Okay, till then, bye, take care.